A very warm welcome to our esteemed guests for today. Dr. Anis, IRS Deputy Director, the Narcotics Control Bureau, and Mrs. Niti Shankar Sharma, Assistant Professor and Joint Director, CBSE. Mrs. Raj Lakshmi, representing SPYN, Society for the Promotion of Youth and Masses. Thank you so much for gracing us with your presence today. We're delighted to have you, and again, a very warm welcome to you. So today's program is meant to enlighten all of us about the drawbacks of substance experimentation, and the experts who have joined us today need to be listened to very seriously because they come with a lot of experience. Our experts are going to share their insights that are not only going to be just informative but potentially life-changing, life-saving. So let us as self-defense resolve to protect each other from any form of addiction, and let us strive to create a healthy society which is based on the principles of mutual trust and a collective responsibility. And I'm delighted that Sanskriti is ready to take the lead in this endeavor. So once again, a big thank you to our distinguished guests, and we look forward to your thoughts. Thank you. May I call upon stage Dr. Anis C, IRS Deputy Director, Narcotics Control Bureau, to address the gathering. Respected Principal, teachers, my colleagues from Narcotics Control Bureau, CBSE, SPYN, and my dear students. It gives me great pleasure to be here, not only as an officer of Narcotics Control Bureau, but also as a parent of 3 children studying in this very school. That makes today's event the very first program under CBSE-NCB Memorandum of Understanding, especially meaningful for me. Because today we begin something important, not just an awareness campaign, but a movement to protect young minds and shape a safer future. When we talk about drug menace, it's not a problem far away from us, somewhere in the society. No, it is here, in our cities, sometimes in our neighborhoods. Traffickers do not wait outside the schools or clubs nowadays. They are on your screens, in social media, in the online games, and in the dark web. They use technology, plan, and psychology to target the youth. And many young people don't even realize when a moment of curiosity becomes a trap. That is why awareness is no longer an option, it is an essential feature. The Narcotics Control Bureau, or the NCB, is India's national agency to fight both drug trafficking and drug abuse. We operate under the Ministry of Home Affairs with our units spread across India, from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat's coastline to the hills of northeastern India. Our mission rests on 3 major pillars: intelligence and enforcement. We stop the flow of drug and dismantle the cartels, whether it is domestic cartels or international cartels. We do the coordination work, bringing together all agencies, states, the police, the customs, the border security guarding forces, Coast Guard, intelligence, and all other ministries, including education ministry, to act as one to fight against drug menace. Our mission is drug-free India by 2047. And the third pillar is awareness and prevention, reaching people before the problem begins. That is why we are assembled here. Because
you must be knowing that the fight against drug cannot be won by one agency. It requires collective effort. Government, schools, parents, communities, all of us must move together. Let me share a few real examples of what Narcotics Control Bureau officers do daily. At the border, Indo-Pakistan border, our officers, along with border security force, detect 23 kilograms of heroin, which was landed through drones from the Pakistan side. We seized it. That consignment could have ruined thousands of lives. At Delhi airport, our officers prevented one passenger who had swallowed a capsule of cocaine, 86 capsules of cocaine. He was saved, but a big trafficking gang was exposed. In another case, down south in Kerala, the traffickers were using dark web and courier agencies to deliver narcotics disguised as chocolates. These are not just stories of enforcement. These are stories of saving lives. That is why our today's program matters. When Narcotics Control Bureau and Center Board of Secondary Education through an MOU comes together, marks a historic step, connecting the law enforcement with education. Our goal is to bring age-appropriate, scientific, and interactive awareness programs to schools so that students understand, not fear, discuss, not hide, and make informed choices. And it is fitting that Sanskriti School is the first to host this. You are setting the tone for schools across India. Apart from this, Government of India and NCB has taken many major initiatives. I would like to mention a couple of them. One is ENCODE mechanism, national coordination, which brings together 30 ministries and all state governments to one platform. It is the biggest example of whole of the government, whole of the society action against drugs. The second one was launched by Honorable Prime Minister of India, which is called Manas. You will see the 1933, which is of the National Narcotic Helpline. Anyone who needs help or advice, please call on those numbers. If you know someone is struggling, a friend, a neighbor, or even a classmate, just remember the number 1933. It is free. It is confidential. It's about help, not punishment. Because addiction is not always a crime, but it could be a cry for help. So where 1933 helps you. Dear teachers, you are our first line of defense. You notice when students changes. When confidence fades, concentration drops, or behavior shift. Please don't dismiss them as just teenage moods. Sometimes they are silent signals. A gentle talk, timely alert, or a referral for counseling can save a child's future. Let us make our schools safer space when children can speak without fear and seek help without shame. And to my young friends, listen carefully, please. You are growing up in an environment, a world full of choices. Some choices define you, but some destroy you. Drug promise false excitement, but deliver emptiness. They promise freedom, but they end you up in chains. Your real power lies in your mind. Your ability to think, create, and dream. Don't surrender that power to any chemicals. Find your high in achievement. Find your thrill in learning. Find your peace in purpose. If you ever feel low or confused, talk to someone, a parent, a friend, a teacher, or even
Manas helpline. That will guide you. Asking for help is not weakness, it is wisdom. My friends, the fight against drugs is not the job of one agency again. It is a national mission, and every citizen is a stakeholder. We, everybody, students, teachers, officers, all general public, should at least dedicate 30 minutes in a week to fight against drug menace. Let Sanskriti School be remembered as the first place where this partnership between NCB and CBSE took root, and from where the awareness spread to every classroom, every family, every mind in the country. Together, we can ensure that India's future, our children, remain strong, aware, and drug-free. Jai Hind. Thank you so much, Anisa, for shedding light on roles and responsibilities of NCB and motivating our students against drug abuse. Now, next, we have a presentation by Ms. Neeti Shankar Sharma, who is an assistant professor and a joint director with CBSE. Ma'am, we please request you to come on the stage. Dr. Rees, Riksha ma'am, all the officers here of NCB, all our educators, teachers who are present here. We had an MOU, it's a memorandum of understanding. We had it with the NCB. He's Mr. Rahul Singh, he's an IS, right? And on the other side, we have the DG of NCB talking about, right? So we had these workshops and all, and then a lot of things have been there. This is important for the educators here also who are present, that this is a Manas helpline, and it is, so we do a lot of things. We are also doing some, initiatives with AIMS, and there was a series on mental health from AIMS, which CBSE has done. These are things that are happening and that you will be knowing it later on. Next, please. We have some initiatives on career counseling also. Because what you have to do in life ahead, how many of you are thinking at this moment, at this stage in your life? How many of you are thinking? As CBSE have these career counseling initiatives, you can always go to the website, you can always go to the places where we are offering such things and just read it as a story, read just to have fun. Career guidance dashboard is there, which has the CBSE careerguidance.in. So the senior people who are sitting here, they can go and just have a fun time thinking, what does this particular, see, engineer, doctor, IS and such things you all know, you quite aware. But if there are some things like somebody who's doing on digital intervention, digital technology, machine learning, or if at all you're not into STEM and you want to do something in arts, liberal arts and all, go to this website and see इसमें क्या होता है. Next, please. Podcast. How many of you have seen our podcast? Very, very good. Very good. Very good. So I'm so happy. So CBSE has these podcasts, and there are good speakers there, and there are children also. Maths वाला किसने देखा था? Maths Olympiad वाला जो podcast था. The kids who were in the Maths Olympiad. If you haven't, then go. We have a very good podcast with Secretary CBSE. He is talking to the children who have done wonders in International Maths Olympiad. And they have explained how maths can be fun and not something that we should be afraid of, if at all we are afraid of maths. Fine? So go and look into those things. Before this, I will also tell you one thing, and it's for all the educators also. CBSE is doing this podcast. Now we also have issued a circular where we have said that if any kid or any school is planning to make something, maybe record something, make a reel, make some interesting thing which you all are really fond of, have something substantial on some good topic and submit it to your principal or the teachers or whosoever is your class teacher, it should come to us in CBSE and we'll put it on our platform. Now these are the different telecounseling helplines. Again, you can have a look at it. Your teachers will help you, but these are basically for the elders who are doing their 10th and 12th standard. And we have the free of cost
जस्ट पिक अप अ फोन, आपको जो बात करनी है, सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, एग्जाम के बारे में बात करनी है, जो भी कुछ करना है उसको आप इजीली कर सकते हो. सो नेक्स्ट वी आर आउट ऑफ दिस थिंग, एंड आई अग्री दैट हमारा ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो लर्निंग है, दैट हैज टू कंटिन्यू. There are a lot of ways to combat it rather than going through any sort of a substance use or getting into things which are not as these experts will explain you on the right. So I'll end on this, but with a thought कि ये दोनों चीजों को, बस ये दो चीज तो जरूर ध्यान रखना, और बाकी आपको एनसीबी और सर और बाकी प्रेजेंटेशन में आपको होगा कि आप how can you speak strong enough to say no to any substance or drug abuse. And these were the reels that I was talking about, that if you develop interesting reels, yeah. नाश्ते की तो है, what's the big deal? अरे wait, that's the wrong bin. We should use reusable water bottles because they are way more eco-friendly. We should throw it in the blue bin. That is the right choice. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, राइट? So I want to share this slide with ma'am. There are thousands and thousands of websites all over, YouTube channels which are giving you information. Tell them these are the only authentic sources that they should really go to, so that you yourself, your elders and your parents are not misinformed, right? Thank you so much and have fun. As a part of the preliminary round, the grade representatives of class 11 and 12 participated in a group discussion on substance abuse. The session encouraged thoughtful dialogue and exchange of diverse perspectives. The grade representatives discussed about the following topics. Number 1, why is saying drug-free a choice of strength, not weakness? Every student is an ambassador for awareness. How to make school campus drug-free? Impact of drug abuse on individual and society. And lastly, how social media or online games expose students to drugs. After being briefed on the insights and viewpoints shared during that session, we decided to carry forward some of the most compelling ideas into our final presentation. It refers to the harmful or hazardous use of psychoactive substances, including alcohol and illicit drugs. One of the key impacts of illicit drug use in society is the negative health consequences experienced by its members. Drug use also puts a heavy financial burden on individuals, families, and society. Now, how drug and alcohol use leads to addiction. So stage 1 is exposure. Teenagers today face increasing exposure to drugs, nicotine and vaping products. Many start out of curiosity, peer pressure or stress, often unaware of long-term harm. Stage 2 is emotional dependence. The use of drugs or alcohol gives a short-term feeling of happiness or excitement. People begin to like this feeling and start using drugs even when they don't need it. Stage 3 is addiction. Over time, the body gets used to these substances and needs more to feel the same effect. This keeps repeating and eventually leads to addiction. This is the current scenario. Globally, at least 15 million teenagers aged 13 to 15 use e-cigarettes or vapes. In 2024, approximately 26% of high school seniors reported using cannabis in the previous year. In 2024, 21% of 12th graders reported vaping nicotine in the past year. It is estimated that 1.5 crore or 15 million minors aged 10 to 17 years use substances. 67% of drug users initiated substance abuse at the age of 19 or younger, with 52% starting within 16 and 20 years of age. With the growing use of substance abuse, it becomes necessary to differentiate between use, misuse, and abuse. Use, it refers to taking a substance as intended or prescribed. For example, taking prescribed medicine in the right dose or drinking occasionally in moderation. Then misuse. Misuse refers to incorrect or inappropriate use of substance, often unintentionally. For example, taking more pills than prescribed or using someone else's medication. Abuse refers to the deliberate and harmful use of a substance to achieve a high or mood change.
For example, using drugs or alcohol excessively despite negative effects. So we will now be enumerating the various consequences of youth substance use. Due to youth substance use, it leads to increased risk of accident and injuries. It also leads to physical health issues like weakened immune system, damage to brain and heart functions, and it also results in a variety of mental health problems such as depression, apathy, and withdrawal. It also leads to reduced future education and job opportunities, and also leads to family conflicts and potential dysfunction. Now, what is vaping? Vaping was first introduced as a safer way for adult smokers to quit cigarettes. E-cigarettes deliver nicotine without burning tobacco, but they still contain toxic chemicals. Over time, flavored vapes like mint, candy, and fruit made them appealing to teenagers. What started as a quitting tool for adults has now become a new addiction trap for youth. Myth versus reality. The myth is that vaping is just flavored water. While the fact is that vaping is not just inhaling flavored vapor, they are filled with liquids that contain chemicals, nicotine, and flavorings. Second, vaping isn't as bad for you as smoking. The fact is that nicotine in one small vaping pod can be just as much as a whole pack of cigarettes or more. That means vaping a single pod can cause a nicotine addiction and could be enough to make you sick. Vaping isn't addictive. I can stop vaping anytime I choose to, with willpower alone. The fact is that nicotine in e-cigarettes is highly addictive. Regular vaping can lead to nicotine dependence, withdrawal symptoms, and increased tolerance, similar to traditional smoking habits. The myth is that smoking occasionally is not harmful. The fact is that any amount of smoking is harmful. Even occasional smoking can still damage blood vessels, impairing lung function and increased risk of cardiovascular disease. Now, we will be seeing the reasons why Indian youth get addicted to substance abuse. The very first problem being peer pressure. Children are greatly influenced by their friends. Teens often try alcohol, cigarettes, or vaping for just trying to fit in or seem cool among friends. The second factor is curiosity and experimentation. Today's youth are very interested in what others do. They just want to do what others are doing without thinking whether it is good or bad for them. They just want to try and then become addicted to those substances. And thirdly, it is due to stress and family changes. Academic and social competition, relationship problems, family conflict, or financial struggles can push students to use stimulants or nicotine to cope. One more factor is due to the easy access of such substances. In today's commercial age, things like these substances are often available anywhere and anytime. Things like alcohol, drugs, or nicotine may even be available in black, even in restricted areas. Here are some facts that we have presented. 51% of teens think they are only drinking flavored water. Teens are 3 to 4 times more likely to smoke cigarettes if they use vaping products first, and a single joule pod is equivalent to 20 cigarettes worth of nicotine. The role of education and awareness. Education plays an essential role in creating awareness among youth about substance abuse. It makes people aware about the risks and consequences of substance abuse, so they can prevent themselves from getting addicted or affected by substance. First is early awareness. Taking quick action is the key to recovery from addiction. Education helps in understanding the advantages and disadvantages of drugs. Education gives people the knowledge they need to understand risk factors and dangers and provide guidance before things get worse. Second is solving problems the right way. Education is something that makes people understand the difference between right and wrong. Education enables them to understand the problem and try to solve it the right way without getting a drug addiction. Third is develop skills. Education helps people acquire useful life skills and effective ways of coping. People do not become addicted to drugs or alcohol when they know how to deal with stress, anxiety, and other factors without using substances. It now becomes necessary to highlight how students can act as change agents. Students can become very powerful change agents against drug abuse by learning social norms. One best way students can foster a culture of fun and happiness without substances is through sports. It not only builds physical and mental agility,
but also gives a very strong team network, which is potential firewall against substance abuse. Substance abuse is often linked to underlying issues like anxiety and depression. Students can advocate for and support mental health services on campus. By creating a culture of compassion, they can help reduce the stigma of seeking help. Major reason for proliferation of drug abuse is peer pressure. The student community must develop and practice resistance skills to help themselves and their peers navigate social situations where they might be pressured to use drugs or alcohol. Our discussion today looks at how digital environments such as Instagram, Snapchat, Telegram, YouTube Shorts, X, they are reshaping the landscape of drug exposure among our youth. Let me ask you a question. How many of us here use Instagram? According to the UNODC World Drug Report 2024, nearly 35% of first-time drug users under the age of 21 say their first exposure came through social media content or peer reposts. In India, the NCB investigated over 1,200 cases in 2023 and 24 that had a direct or indirect online link, either sales coordination or to the direct glorification of its use. What we'll uncover today is how social media doesn't just show drugs, it normalizes and also monetizes them through influencers, trends, and memes. Remember, every algorithm rewards engagement, not necessarily ethics, making awareness our first line of defense. So why is this discussion so important now? In Delhi, NDPS cases involving minors have increased by 38% in 2024 to 25, with over 60% linked to direct online contact points. Social media and online games are now major platforms where the first exposure takes place. So here's very interesting data that I've come across. So in 2023, we saw that image right there. The source is Delhi Police, and the average arrests per case in 2022 were 1.14 and in 2023 were 1.12. This shows that in the entire spectrum, there's not only one person involved, but there are more than one people operating behind the curtains. A snapshot of how substance use is depicted among children. Among Indian adolescents between 2019 and 2021, from the ages of 10 to 17 years old, we could see that alcohol usage is hovering around below 1%. Now, it might not sound too major a problem as a statistic, but we have to understand that there are many other cases that are not recorded, or the severity of the cases might not also be explored. In fact, since 2022, Delhi juvenile NDPS arrests rose by 41%. That is a major number. Majority of these cases were linked to online contacts, just proving how dangerous the online contacts can be. Of course, early detection is always critical for prevention. As the saying goes, prevention is better than cure. So now we will see how social media fuels the entire exposure process. So the very first point begins when a student or anyone from our age group comes across to know that such a thing exists. We discover this through Instagram Reels, Shorts, meme pages, and influencer-infused content which glorifies such substances. Algorithms serve related to content once initial interest is shown, creating a final effect of increasing the penetration of such content in your feed. Secondly, granting access. We gain access through open portals wherein we get in touch with these people. And the third and the most disturbing stage is the normalization stage, where we do promote such products and such things among our peer groups. And then we pretend to assume the fact that this is completely normal since everyone is doing it. And this is where the entire equation goes down the line. And supporting the entire infrastructure is the logistics. Payments are made online or in cash,
and these payments come nowhere in the official records, as the people paying and receiving such payments are not officially recognized bodies or institutions, but are private accounts. And then there are designated drop-off points and courier delivery services which completely make this process safe for the person who is buying as well as selling illegal substances. The Pew Internet Research Center 2023 observed that teens spending over 3 hours a day on image-centric platforms were 2.8 times more likely to try intoxications within a year. Psychologists call this observational reinforcement. Seeing something repeatedly associated with fun or status trains the brain to view it as positive. Even neutral content, party videos, fashion reels subtly enforce consumption of such content. Next, we're going to talk about algorithmic traps. Whenever you like a post, a story, a reel, a tweet even on X, the algorithm has advanced to such a level that it can read your mind and it can read what you're thinking when you're liking that post. So therefore, whenever you like a post for a specific topic on Instagram or any other social media platform, you will get more and more content related to that topic. Platforms amplify similar content to when users engage with, creating targeted recommendation tunnels. Say, for example, a very popular trend known as a wave trick, which went viral a while back. If you liked one reel or one story on that particular topic, you would be getting more and more and more content based on that topic. Therefore, your friend group will be influenced by that topic, and you would be pressurized to fall into that vicious cycle. In fact, in Delhi, a student reported that after liking just 3 videos about cannabis myths, her social media feed became 90% substance-related content within a couple of weeks. It just shows how fast technology is moving in the modern era. Now we will understand the entire influencer effect. When teens see people they admire doing something risky but popular, this perceived risk drops by up to 40%. The American Psychological Association in 2023 termed this phenomena to be the peer mimicry effect, where seeing someone else engage in an act, redefining it as socially safe. So there is a lot of algorithmic amplification when we see how the influencer effect comes into action. Instagram's recommendation models show that users similar content once they interact with even one wave or party-related theme post. The Meta Transparency Report in 2024 confirmed that drug-linked visual content gets 2.5 times higher engagement than regular posts, meaning that it is circulated more widely. So, the influencers often promote vape or party substance as a part of aspirational lifestyle, completely normalizing substance abuse. Students are significantly more likely to try these substances if they believe that the people they follow or believe in are replicating such actions. Paid promotions and disguised ads are often termed as herbal relaxants or energy gummies, but they tend to contain banned and illegal substances. The recent web series directed by the son of a renowned Indian megastar, a scene openly depicted the use of vape. Despite vaping devices being prohibited under the Indian law, this act was showcased and widely circulated on social media without any form of disclaimer. The actor featured in the scene subsequently faced legal scrutiny as the National Human Rights Commission and Mumbai Police initiated commission action over the alleged violation of the Prohibition of Electronic Cigarettes Act. Closed communities and coded language. Platforms like Discord, Telegram, and even WhatsApp, which offer end-to-end encryption on our chats and other conversations, are being misused by many drug traffickers to package and sell drugs.
These features make law enforcement intervention challenging as evidence disappears and communities remain invite only. Coded language. Drug dealers often use coded language to communicate with specific emojis or phrases. Did you know the snowflake emoji that's available on our keyboard is often used as a nickname or an emoji for cocaine? The emoji of a car is used for asking if package delivery is available or not. Inbox for price, DMs for menus, location drops, and many other emojis are being used by the drug traffickers to communicate. In 2023, a 200-member Telegram group selling MDMA, LSD, and hash, that is, cannabis, was uncovered. More than 60% of those members were students. The group used coded language, cryptocurrency payments, and dead drops for delivery near educational institutions. The US DEA in 2024 found that Snapchat linked cases rose by 63% worldwide in just a year. Discord was originally built for gaming communities. In fact, many of us don't even use Discord. It's perfect for hierarchical drug networks to operate undetected. Investigators say encrypted file sharing and bot commands are used to send location pings for drops. Now we will be talking about how gaming platforms become a gateway for substance abuse. There are in-game chats which are not recorded on any official channel and the data of which is not maintained or handed over to any authority for any investigation. The NCB Cyber Division in 2024 confirmed that nearly 1 in every 9 digital narcotic leads originated from online gaming interactions. Now we see the psychology of microtransactions coming in here. Small in-app purchase conditions users to spend casually. This blurs the emotional barrier between gaming payments and illegal micro payments for drug disguised as game add-on or virtual items. So there is a case in the Bangalore network gaming spectrum where police uncovered a drug operation targeting students through online gaming communities. We're also going to talk about psychological hooks. Most students at this age are vulnerable to many addictions. Why? It's because your hormones, your body is changing every day. Therefore, social media likes, gaming rewards, and even gift boxes are triggering the same neurological reaction as addictive substances. These are also known as the dopamine loops. Dopamine is nothing but this chemical that is released in your brain whenever we perform an activity that we like or enjoy. Next is the FOMO, the fear of missing out. It's very prominent nowadays. Many of us feel the fear of missing out or not being included in our groups. Therefore, which it leads us to partake in or indulge in activities that are that are illegal. Gamified offers, such as the first sample free or many other messages, are disguised as giveaways for many other items, but they turn out to be illegal substances. Research insight provides that 72% of teens report that peer acceptance was the primary reason for their usage of drugs. Which means that if our peers are using it, then there is a high probability that we might get into drugs. So these are two examples of social media posts that I came across the last week. So in this we see that how these two posts tend to create a romantic association with such a serious topic. A serious topic like substance abuse has been glorified in a sarcastic and a very disturbing manner. Digital exposure to use. Almost everybody uses phones here, even those who don't have it use their parents. In Delhi, 1 in 8 students received substance-related images online in the past 12 months. Online first exposure is present in over 70% of juvenile IDPS cases.
that only stresses on the fact that we have to be alert whenever we receive a message from an unknown number. In fact, we have to take all precautions to ensure that we are speaking to the right people. There are many early warning signals that may be shown by our friends and our family members if they are evolving into any such activities such as substance abuse. So the digital ones are the new anonymous accounts, secret DMs, and rapid shift to encrypted platforms can be a severe red flag. And then there are various other behavioral ones such as we should monitor trending content. Any viral content or any trends or tricks that are going on in Instagram or other social media platforms should be monitored and should be carefully observed and try to help others who are falling into the cycle. We should conduct regular safety workshops should be conducted by schools to help ensure that any student who has been caught in the cycle can be helped and can come out of this. Next, anonymous reporting tools such as the counselor. Sanskriti School has a counseling department which is very helpful for our students. So if you know anybody who has a problem or if at all you are struggling from a problem, the counseling department is always free for you. so. It is a final call to action and say no to drugs and substance abuse. Digital awareness is our first line of defense. Early intervention can help us to potentially save lives. Recovery is possible with support. Students, there are several awareness programs. There is an International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. That is 26th June. And on occasion of that, NCB, Narcotics Control Bureau, and other agencies, that may be Education Department or Ministry of Social Justice and Empowerment, they celebrate it as fortnightly. मतलब 15 दिन का पखवाड़ा मनाते हैं. 15 दिन तक कंटिन्यू अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं. They also cover schools, colleges, your mass gatherings like markets, malls, or beaches like Marine Beach in Mumbai, in Goa, in the whole world. Not only in our country, in the whole world, there are several awareness campaigns to cover up all the communities, not only the students, but also the parents and the workers in the industries, in the pharma industries, also in the factory areas. Thank you. नुक्कड़ नाटक का महत्व जन जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने और बदलाव को बढ़ावा देने में है। ये एक सस्ता और सुलभ माध्यम है जो सार्वजनिक स्थानों पर खेला जाता है ताकि कम समय में बड़ी संख्या में लोगों तक संदेश पहुंच सके। Now we have the NCB team to present a Nukkad Natak focused on dangers of drug abuse and its far-reaching effects on individuals, families, and wider communities. Through this performance, awareness, encourage thoughtful choices, and inspire everyone to stand united against substance abuse. हमारी टीम आप सभी के लिए छोटा सा नाटक लेकर आई है और हम लोग बहुत देर से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं नशे के बारे में, तो इन्हीं बातों को थोड़ा सा मनोरंजन के तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो तैयार हैं आप सब नाटक देखने के लिए? तो एक काम करते हैं, नाटक शुरू करने से पहले एक माहौल बनाते हैं और इसमें हमें आप सभी का सहयोग चाहिए। हम यहाँ पर ढपली बजाएंगे, एक गीत गाएंगे और आप सब क्लैप करके हमारा साथ दीजिएगा। तैयार है सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं।
से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। शुरू करते हैं एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, मैं हूँ नशे का दानव जो तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर देता है, तुम्हारे सपने को धुएं में उड़ा देता है तुम्हारे अंदर की शक्तियों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे भविष्य को धुएं में उड़ा दूंगा क्यों डर लग रहा है? बस एक कस और बस सब भूल जाओ। जिंदगी बड़ी टेढ़ी है, मैं उसे सीधा कर दूंगा याद रखना, मैं वहीं पनपता हूँ जहां डर, अकेलापन और कमजोरी होती है। अगर तुम्हें अपने पर भरोसा है तो मैं पैदा भी नहीं होऊंगा। बस मुझे हराने के लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं है, बल्कि बस ना बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं सबको जन्नत की सैर कराता हूँ, बस मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो क्योंकि मैं नशे का दानव हूँ लो हो गई सारी साफ सफाई, हो गया क्लिनिक साफ, लेकिन डॉक्टर साहिबा तो अभी तक आई नहीं। कह रही थी कि नंदू बेटा 9 बजे दुकान खोल दियो, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी। क्लिनिक को खोले 1 से 2 घंटे हो गए, लेकिन आने का नाम नहीं है। मैं बता रहा हूँ हमारी डॉक्टर साहिबा ना अपने काम के लिए सीरियस नहीं है। जिस दिन मैं डॉक्टर बनूंगा ना, सबसे पहला कंपाउंडर, सबसे पहली नर्स अपनी डॉक्टर साहिबा को रखूंगा। उसके बाद तो मेरे ठाठी था, कुर्सी पर आराम से बैठूंगा, मरीजों को देखूंगा। डॉक्टर साहिबा, मैं तो आप ही की तारीफ कर रहा था। आ गई आप? हाँ, मेरी तारीफ कर रहे थे? जी। क्या बोल रहे थे? मैं बस यही कह रहा था, जिस दिन मैं डॉक्टर बनूंगा उस दिन आपकी तरक्की हो जाएगी। तुम डॉक्टर बनोगे? हाँ, मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरी माँ का बहुत पुराना सपना है, बचपन का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। तुम पेशेंट का ढंग से ख्याल तो रखते नहीं हो, डॉक्टर क्या बनोगे? क्या बात कर रही हैं आप? मैं अच्छे से ख्याल रखता हूँ, मैंने सारे पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखा। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। अच्छा, एक बात बताओ, वो 3 नंबर वाले पेशेंट का क्या हुआ? उसका जैसा आपने कहा था कि उसको कोई दिक्कत हो तो दवा देना, मैंने उसको सुबह पेट में दर्द था, मुंह पे तकिया रख के दवा दिया। अरे मेरा मतलब था उसको दवा देना, दवाई देना, मेडिसिन। दवाई देना? तो आपको दवाई बोलना चाहिए था, आपने दवा क्यों बोला था? आप जो बोलेंगे मैं तो वही करूंगा ना। अच्छा ठीक है, वो 6 नंबर वाले पेशेंट का क्या हुआ? उसका मैंने अच्छे से ख्याल रखा, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए? लेकिन वो तो कोमा में था ना। कोमा में था? अरे तुमको बताना चाहिए मैं कोमा में हूँ। अरे कोमा वाला कैसे बताएगा कि वो कोमा में है? क्यों जब आप गोवा में होती हो आप बताती हो ना मैं गोवा में हूँ। तो कोमा वाला नहीं बताता। कोमा वाला नहीं बताता? नहीं बताता तो ये बात मुझे कौन बताएगा? ऐसे बनोगे तुम डॉक्टर? तो मैं कैसे बनूंगा डॉक्टर? मुझे तो जरूर डॉक्टर बनना है। देखो, अब मैं जिस भी पेशेंट का इलाज करने जाऊंगी तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, ठीक है? क्योंकि फैमिलीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। जो तुम्हें समझनी होगी, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, मैं आज से और पढ़ाई लिखाई शुरू करूंगा, फिर मैं सबका इलाज करूंगा। मैं देखता हूँ किसी और पेशेंट को फिर पोस्टमार्टम के लिए। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं ऐसे ही परिवार की कहानी तुम्हें दिखाती हूँ जो हंसता खेलता परिवार था, लेकिन वो किस तरीके से बर्बादी की ओर चला। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ठीक है, आइए। उससे पहले मैं आपको बहुत सी चाय भी पिला दूंगा। आ जाइए आप। रवि, बेटा रवि। हाँ पापा। कहाँ थे इतनी देर से? वो स्कूल के कुछ नोट्स तैयार करने थे, वो कर रहा था।
स्कूल के नोट्स? हाँ। आज इतनी जल्दी सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल नहीं जाना क्या? वो पापा क्या है ना, लास्ट टाइम मेरे एग्जाम में 92% आए थे। हाँ। तो इस बार मुझे 98 ला रहे हैं, तो इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा था। अरे वेरी गुड, तुम कम से कम ये तो सोचते कि 98% आए। हमारे टाइम पे हम तो ये भी नहीं सोच पाते थे, पर अच्छा है कि तुम पढ़ने में ध्यान देते हो। अच्छा एक काम करो, सामने टेबल में मेरी सिगरेट की डिब्बी रखी है और लाइटर भी होगा, जरा पकड़ा दो मुझे। ठीक है, अभी लाता हूँ। हाँ। ये लीजिए पापा। वैसे पापा एक बात पूछूं मैं? पूछो। ये आप बार बार में सिगरेट क्यों पीते हो? क्योंकि स्कूल में टीचर्स बताती हैं कि सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो आप बीमार होना चाहते हो? अरे नहीं बेटा, किसने कहा कि सिगरेट पीने से बीमार होते हैं? सिगरेट पीने से तो सुकून मिलता है और दिन भर की टेंशन दूर हो जाती है, समझे? सुकून मिलता है, टेंशन दूर। पापा, हाँ? क्या मैं भी एक सिगरेट पी लूं? अभी आपने ही तो कहा कि टेंशन दूर हो जाती है। मुझे भी एग्जाम को लेकर बहुत टेंशन है। बेटा एग्जाम को लेकर टेंशन को किताब खोल के बैठ, किताबों को पढ़। सिगरेट पीने से क्या पास हो जाएगा? नहीं, आप ही तो कह रहे थे। तैयार हो स्कूल का? मैं जा रहा हूं अंदर। ठीक है, खुद ही बोला और खुद ही मना भी कर दिया। एक बार ट्राई करने में जाता है, देखता। इससे तो खांसी आ रही है। वन मोर टाइम। अब तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा, अच्छी तो होती है। रवि, रवि, अबे तैयार नहीं हुआ अभी तक? अरे सचिन, बस तैयार ही होने वाला था मैं अभी। चल तो फिर चलना यार, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ चलते हैं, वैसे 2 मिनट हो, अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी लेके आ। तू वैसे भी हमेशा लेट नतीब रहता है यार, कभी नहाने के नाम पे कभी खाने के नाम पे हमेशा लेट करवाता है, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। अबे आजा भाई जल्दी। हाँ हाँ, चल चल आजा। हाँ। अच्छा एक बात बता, हाँ। कल तू पार्टी में क्यों नहीं आया रोनी की? अरे यार, मैं पार्टी में आके क्या करता? क्यों? है वहां पर सब लोग जो है ऐसी ऐसी चीजों का यूज करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। ओ भाई कैसी चीजों का यूज? अबे वहां सब तो जिंदगी जीना जानते हैं, एक चुटकी में सारी टेंशन को मिटाना जानते हैं, सब कूल लगते हैं भाई, वहां कूल दिखते हैं। तेरे को लाइफ में कूल नहीं बनना क्या? अरे यार, ये सब चीजें करके लोग कूल बनते हैं क्या? वो तेरे को यही नहीं पता? अबे भाई यही लाइफ है। अपन स्कूल के बाद में कॉलेज जाएंगे, वहां पे क्या होगा? सब बड़े बच्चे मिलेंगे, उनके साथ एडजस्ट करने के लिए, जिंदगी की जितनी भी टेंशन है उसको दूर करने के लिए एक बार कभी ना कभी तो ट्राई करना पड़ेगा ना, तभी तो लाइफ में आगे बढ़ेगा। मैं तो कहता हूं तू ना जल्द से जल्द एक बार ट्राई कर, उसके बाद देख यही पार्टियां तुझे अच्छी लगेगी, यही लाइफ तुझे अच्छी लगेगी। और ये जो तू किताबों का कीड़ा बना रहता है ना, इससे कुछ नहीं होता भाई जिंदगी में। लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी होता है। हमें देख लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। मैं तो कहता हूं तू आज मेरे साथ चल, स्कूल छोड़, आज तुझे ट्राई कराता हूं, उसके बाद देख तो अपने भाई को याद करेगा जिंदगी भर। सच में? हाँ हाँ, हाँ, मैं तभी तो कहूँ, मैं तुझे जब भी देखता हूँ तू हमेशा कूल मूड में रहता है, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं लेता है और हमेशा मस्त रहता है। फिर ठीक है, अगर तू कहता है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये हुई ना बात, तो चल आज तुझे लेके चलता हूँ उसके पास जो हम सबको खुशियां बांटता है, कल्लू दादा। कल्लू दादा? हाँ, तो ये कौन है? ये कौन है? अबे यही तो है वो जादूगर जो सब में जादू बांटता है। आजा मेरे साथ, मिलवाता हूँ तेरे को। ठीक है, आजा। अपना स्कूल है ना, हाँ, स्कूल के पीछे ही तो मिलता है वो। अच्छा। बहुत सारे लड़के भाई मुझसे रहते हैं सब। और तू चिंता मत कर, फर्स्ट टाइम तो मैं तुझे फ्री में दिलवा दूंगा। अरे कल्लू दाढ़ी कहते हैं आ गया और नशे में ही रहते हैं। फर्स्ट टाइम तो मैं आज भी तुझे कोई ना कोई बकरा आएगा। फर्स्ट टाइम तो मैं तुझे फ्री में दिलवा दूंगा, लेकिन उसके बाद तुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत महंगी चीज होती है। पैसे? अबे पैसे घर से पैसे तो ला सकता है ना। अरे तेरे पापा तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तेरे को क्या टेंशन है यार। ठीक है, ले आएगा ना? चल मैं बात करके आता हूँ, इधर ही रुक, ये ले तेरा बैग पकड़। कल्लू दादा आ गया बकरा। कल्लू दाढ़ी कहते हैं। कल्लू दादा हाँ, नया बकरा ले आया हूँ।
नया बकरा। अब सुनो, मेरा जितना भी उधार का पैसा है ना वो सब इससे ही वसूल करना है तुम्हें। मतलब तू नहीं देगा पैसा? अरे ला के दे रहा हूँ ना कस्टमर। और सुनो, वो फर्स्ट टाइम इसको फ्री में ट्राई करने के लिए थोड़ा सा दो ना। माल तो है ना उसके पास? अभी नहीं है, लेकिन मंगा लूंगा, करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। अब दो ना यार। अगर नहीं मिला ना तो डबल लूंगा, डबल। हाँ हाँ पता है, तुम्हारे चक्कर में घर के बर्तन तक बेच चुका हूँ मैं। ये ले, ठीक है, पूरा मजा है। हाँ हाँ। और उसी में ही असली मजा है, क्योंकि कल्लूदार कहते हैं नशे में ही रहते हैं। सुन, काम हो गया। ये मिल गया देख, देख रहा? अरे ग्लूकोन डी, अभी पानी लेके आ रहा हूँ। अबे तू ये बॉर्नविटा की दुनिया से कब बाहर निकलेगा यार? बड़ा हो जा भाई। ये वो नहीं है जो तू सोच रहा है। तो अबे इसको लेने का तरीका भी अलग है। इसकी एनर्जी ग्लूकोन डी से कहीं ज्यादा है। चल एक बात बता, 10 का नोट है क्या तेरे पास? हाँ हाँ है है ना? चल उसी से बताऊंगा तुझे कैसे लेगा। 10 के नोट से क्या लेना है? पेप्सी? अरे तेरे पेप्सी कुरकुरे चिप्स भाई, मैं तो सुन, फर्स्ट टाइम है, जैसा बोलूंगा वैसा करियो। और थोड़ा लेना, ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। नहीं नहीं, अरे कम से कम दो चम्मच तो डालना पड़ता है, तभी तो मीठा होता है। ओआरएस है ये, ओआरएस है ये, 2 चम्मच क्या है? चल चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ। सुन, इसको क्या करना है, 10 का नोट लेंगे ना पहले, इसको ऐसे सीधा बिल्कुल साफ होना चाहिए, ऐसे देखा, ये थी नशे की तरफ जाने वाली पहली सीढ़ी। इसी तरह सभी मेरी गिरफ्त में आते हैं। क्योंकि मैं हूं नशे का दानव। कैसा लग रहा है? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अबे कुछ तो बोलेगा। मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि मैं वैसे उड़ रहा हूँ। हाँ तो तू उड़ रहा है, ये तो जादू है। जमीन में रहेगा लेकिन उड़ेगा बिना पंखों के, हवा में। इतना ऊपर जाएगा, फिर कोई तेरे बराबर में नहीं रुकेगा सिवाय मेरे। मेरे को तो रुकना पड़ेगा भाई तुझे पकड़ने के लिए, ये तो तू ज्यादा ऊपर निकल गया तो। लेकिन ये तो बता तू है कौन? मैं सचिन, तेरा दोस्त। मेरा दोस्त सचिन, हाँ याद आया, लेकिन वो तो स्कूल में। अबे तुझे बोला था मैं हल्का रखियो, फिर भी यार। चल मेरे साथ चल। हाँ मैं तुझे बताता हूँ अगली बार क्या करना है। सुन, पैसे लेके आने अगली बार। अगर तू अगली बार पैसे लेके नहीं आया ना तो कुछ नहीं मिलेगा, समझा? जिंदगी जीनी है ना, मजे लेने हैं ना। हाँ। यार इसको बोला था 11 बजे मिलने के लिए, अभी तक आया नहीं कहाँ रह गया? ये पैसे लाता है तो अपना खर्चा अच्छे से निकलता है। सारा कर्जा उतरवा दिया कल्लू दादा का इसने। अब जरा अपनी जेब भी भर जाए तो अपना भी खर्चा पानी चल जाए। अबे कहाँ रह गया रवि? सचिन, अबे यार मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ यार। मैं भी तुझे ही ढूंढ रहा था। ला पैसे दे। पैसे तो मैं नहीं लाया यार। क्यों? अरे यार जितने भी पापा के ड्रॉर में से निकाल लेने सब तुझे दे चुका हूँ। तू आज मेरे को करवा दे, मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगा। ओए पागल है क्या? कोई भंडारा हो रहा है यहाँ? आज करवा दे। क्या होता है भाई? बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता, लेके आ। अरे यार तू मेरा दोस्त है यार। कब मैंने तुझे पैसे दिए थे? इसमें कोई दोस्ती वोस्ती नहीं चलती भाई। जो दोस्ती थी स्टार्टिंग में निभा दी। पैसे लेके आ। अरे यार तू मेरे साथ ऐसे करेगा? अबे परसों भी तो तेरे को 5000 दिए थे मैंने। अबे वो सब ठीक है भाई, वो कभी खत्म हो गए। और पैसे नहीं है, कुछ सोना चांदी घर का कुछ कीमती सामान कुछ भी ले आ। कहीं चोरी कर ले, और कुछ नहीं है तो भीख मांग ले, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं मिलेगा भाई। यार देख तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज मेरे को करा दे यार, प्लीज करा दे। अरे सुनना सचिन, अरे सचिन गलत घोड़े पे दाव लगा दिया भाई, गलत घोड़े पे दाव लगा दिया। नया मुझे बताना पड़ेगा। पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे कहाँ से लाऊं? सर आप मुझे पैसे दे देंगे? मुझे बहुत भूख लगी, खाना खाना बहुत तक। दे दीजिए प्लीज, मैम आप दे दीजिए।
मैं घर से पैसे लाया था लेकिन रास्ते में गिर गए। प्लीज मेरे को पैसे दे दीजिए। पैसे कौन देगा? पैसे कहाँ से लाऊंगा? पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? लुटारा कहते हैं। पहचाना मुझे? हाँ पहचाना, अपने बकरों को कैसे भूल सकता हूँ मैं। कल्लू दादा, तुम मेरे को नशा चाहिए। नशा तो मैं नशा ही तो देने के लिए खड़ा हूँ। माल लिया, माल पैसा रोकड़ा। पैसे तो मेरे पास आज नहीं है। आप आज दे दो, मैं आपको कल पैसे ला के दे दूंगा। मैं तेरे को दे दूं आज और कल हो जाएगा तू गायब। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अब आज नशा दे दो, बस आज। लग रहा है तुझे कुछ ज्यादा ही तड़प हो रही है। दे दो। वो वाला नशा तो बहुत महंगा है, पर मैं तेरे को दूसरा नशा देता हूँ। कुछ भी दे दो। पर हाँ, पैसा कल मिल जाना चाहिए। हाँ मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो फिर ये ले। ये क्या? ये तो इंजेक्शन है। इंजेक्शन नहीं है, इसके अंदर जो है वो तुझे सीधे जन्नत की सैर करा देगा। कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो। इसका इस्तेमाल पता है कैसे करते हैं? नस में। हाँ ठीक है, ये ले और मजा कर। नशा नशा ये नशा 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 ये नशा जन्नत है ये नशा, इसका तू ले ले मजा। नशा नशा ये नशा 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 ये नशा। रवि, इसे क्या हो गया? रवि, इतनी देर से आवाज दे रहा हूं, सुनाई नहीं दे रही क्या? खड़ा। और ये क्या हालत बना? अरे आराम से बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? आंखें लाल कर रखी है। क्या ज्यादा पढ़ाई करने लगे हो क्या आजकल? पढ़ाई? हाँ पढ़ाई। पढ़ाई? वो पापा पैसे दे दो। पैसे दे दो? क्या करना है पैसों का? पैसों का बुक्स लाए। बुक्स। दिमाग सही है? अभी 2 दिन पहले ही तुम्हें बुक्स दिलवाई है, अब कौन सी बुक्स लेगी तुम्हें? नहीं वो बुक्स नहीं, बैग लाना है। तुम्हारे पास 2 बैग है, और कितने बैग चाहिए तुम्हें? तो वो कल्लू कालिया। पापा कल्लू कालिया? ये कौन है कल्लू कालिया? वो कोई नहीं है, आप पैसे दे दो। अरे आखिर करोगे क्या पैसों का, ये तो बताओ। मैं कुछ भी करूंगा, आप पैसे दे दो। कुछ भी करूंगा? अरे बेटा क्या करोगे मुझे बताओ तो सही, मैं तुम्हारे पापा हूँ, बताओ तो सही क्या करोगे पैसों का? तभी तो कह रहा हूँ पैसे दे दो ना। क्या तो रहा हूँ, पैसे दो। पैसे चाहिए मुझे, नशा करना है मुझे, पैसे चाहिए। पैसे। नशा करना है? बेटा तुम स्कूल पढ़ने जाते हैं, नशा करने जाते हैं? मैं कुछ भी करने जाता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। मुझे नहीं पता, पैसे दो। मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता, पैसे दो मुझे, पैसे चाहिए। पैसे पैसे चाहिए, पैसे दो मुझे। 2 मिनट रुको, मैं भी डॉक्टर साहब को लिखा था। बेटा 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब आइए डॉक्टर साहब, आइए चलिए। रवि, इसकी हालत तो बहुत खराब है। इसे अंदर ले चलिए, चलिए उठाइए। आइए आप रुकिए भाई साहब, आप यहीं रुकिए। अब बताइए, मैं सोचता था कि मेरा बेटा स्कूल जाता है, लेकिन ये किस कल्लू दादा के चक्कर में पड़ गया और आज किस तरह का डिसीजन ले लिया इसने। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है? अब वो ठीक है, लेकिन वो नशे की बहुत हाई डोज दे रहा है। ये ऐसे नशे की आदत तो उसे कैसे लग गई? क्या बताऊं, मेरा बेटा अच्छा खासा स्कूल जाता था, अभी मुझे आज और कल से ही पता लग रहा है कि इसकी ऐसी हालत होती जा रही है और किसी कल्लू दादा के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप एक काम करिए, मैं उसे लेकर आती हूँ और जी। उसी से पूछते हैं कि आखिर वो नशे की इस लत में कैसे पड़ा। चलो बेटा, आराम से बेटा, आराम से। कैसा लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है, लेकिन घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। बेटा, अच्छा लग रहा है तुम्हें अभी? ठीक लग रहा है। मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें ये नशे की आदत लगी कैसे? तुम ठीक तो होना चाहते हो ना? हाँ, ठीक बोला चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम नशे की लत में पड़े कैसे? भाई सारी बातें सही सही बताना डॉक्टर साहब को, जब इलाज होगा सही से ना। बताओ। पापा की वजह से। ओए! मैंने कब कहा तुझे नशा करने के लिए? देखिए, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओके, उसे बोलने तो दीजिए कम से कम। हाँ बेटा, बोलो। पापा घर में सिगरेट पी रहे थे, मैंने पूछा था कि क्यों पी रहे हो? इन्होंने बोला टेंशन दूर होती है, तो मैंने भी पी। फिर दोस्तों ने वो पाउडर के बारे में सिखाया, फिर मैंने एक बार लिया तो फिर अच्छा लगने लगा, तो बार देखो बेटा, जो नशे का रास्ता होता है हमें बहुत आसान लगता है, हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन नशा हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। शुरुआत सिर्फ एक सिगरेट से होती है, उसके बाद शराब, ड्रग्स और फिर अंधकार। धीरे धीरे ये नशा हमें खाता रहता है, हमें मिटा देता है, हमें निगलता जाता है।
कहते हैं कि नशा जला देता है, लेकिन नशा हमारे सपनों को जलाता है। वो सपने जो हमारे माता पिता ने हमारी आंखों में देखे थे, हमारे शिक्षक की जो हमसे उम्मीदें थी, और वो भविष्य जो हमें आगे बनाना था, लेकिन वो सब जलकर खाक हो जाता है सिर्फ इस नशे के कारण। जानते हो तुम? बिल्कुल सही कहा जी डॉक्टर साहब आपने। हम तो अक्सर पढ़ते हैं जी, किसी का परिवार जो है वो बर्बाद हो गया, किसी के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, है ना, किसी माँ की बेचारी की गोद सूनी हो गई। वो सब इसीलिए तो होता है क्योंकि ये हमारी युवा पीढ़ी नशे में पड़ जाती है। मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर साहब, हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है ना, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि वो नशे को ना कैसे करे। क्योंकि हाँ कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ना कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन असली हिम्मत वही है जो ना कह दे। असली इंसान वही है जो नशे से ताकत नहीं बल्कि अपने सपनों से ताकत प्राप्त करे। और सच्चा दोस्त वही है जो नशे के लिए दोस्त को मना करे। है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कहा। और तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा जब हम लोग नशे को ना कहेंगे। क्या कहेंगे? ना कहेंगे। क्या कहेंगे? तो आज से ही हम सबको मिलके से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ एंड से यस टू ड्रीम्स। तो आप सब तैयार हैं? से नो टू, से नो टू, से नो टू। तो आइए आज यही बात जन जन तक पहुंचाएं और सबको बताएं कि आओ मिलकर हम, आओ मिलकर हम इस नशे से मुक्ति पाएंगे। आओ मिलकर हम, आओ मिलकर हम इस नशे से मुक्ति पाएंगे और सबको ये समझाएंगे। आओ मिलकर हम, आओ मिलकर हम इस नशे से मुक्ति पाएंगे। आओ मिलकर हम। तो नाटक यहाँ समाप्त होता है, लेकिन शुरुआत आप सबसे होती है। अपनी लाइफ में अपने जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। नशे से दूर रहिए और नशे की तरफ कभी आकर्षित मत होइए, क्योंकि ये आपको जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं दे सकता, बल्कि बेहतरीन चीजों को खत्म करने का एक रास्ता होता है। तो हमारा नाटक यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारा नाटक देखने के लिए। ये नाटक हमने नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और आपके संस्कृति विद्यालय के सौजन्य में यहाँ पर दिखाया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Shri Avdesh Kumar ji, Superintendent of the NCB, to come on stage to administer the pledge against drugs. Let us all join in making a commitment to this significant cause. गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, सभी शांत हो जाइए। हम जो है प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे नशे के खिलाफ। तो सभी अपना शांत हो जाइए, राइट हैंड आगे कीजिए और शपथ को जो है मेरे पीछे दोहराइएगा। ये जो शपथ है ये है जिंदगी को हाँ, नशे को ना। अभी मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ बोलिए सभी। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीले पदार्थों का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे,
और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।